Dear students, today I am presenting you the explanation of part 2 of MANUSHYTA Kavita for CBSE Course B students. प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के दुख सुख की चिंता करने वालों को मनुष्य तो मानता है, परंतु यह मानने को तैयार नहीं है कि उन मनुष्यों में मनुष्यता के सारे गुण होते हैं। कवि केवल उन मनुष्यों को महान मानता है जो अपनों के दुख सुख से पहले दूसरों की चिंता करते हैं। वह मनुष्यों में ऐसे गुण चाहता है जिसके कारण कोई भी मनुष्य इस मृत्युलोक से चले जाने के बाद भी सदियों तक दूसरों की यादों में रहता है, अर्थात वह मृत्यु के बाद भी अमर रहता है। आखिर क्या है वे गुण, आइए जाने कुछ और पंक्तियों में। In the poem presented, the poet Maithili Sharan Gupt considers those who worry about the happiness and sorrow of their loved ones as human beings, but is not ready to believe that those human beings have all the qualities of humanity. The poet considers only those human beings as great who cares for others before their own happiness and sorrow. He wants such qualities in human beings due to which any human being remains in the memories of others for centuries, even after leaving this world of death. That is, he remains immortal, even after death. What are those qualities after all? It will be learned in this lesson and some of the rest of the lines. रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, संत जन आपको करो न गर्व चित्त में। अंत को है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ में, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अंधेर भाव जो भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि भूल कर भी कभी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, क्योंकि कवि कहता है कि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है। उस ईश्वर का साथ सबके साथ है। वह बहुत दयावान है, उसका हाथ सबके ऊपर है, सबके ऊपर रहता है। कवि कहता है कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सोचता है। The poet says that even by mistake, one should never be proud of wealth or fame. We should never be proud that our loved ones are with us, because the poet says that which person is an orphan here, that God is with everyone. He is very kind. His hand remains on everyone. The poet says that the person who is unlucky is the one who has such a haste, because a man is called a person who thinks above all these things.
Explanation. Students, in the life we and you know the fact that those who are rich, they think that money is probably everything and they do not need the help of any other. But it does not happen that people who are coming in this world, every human being fulfills the need of others, human beings, and there is only one God who keeps his blessings with everyone and does not leave anyone alone. अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमंत्र अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो या यों की एक से काम और का सरे, न का रहो न यों की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. In these lines, the poet says, कवि कहता है कि उस कभी न समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं जो परोपकारी व दयालु मनुष्यों का सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर स्वागत करते हैं. इसलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो. कवि कहता है कि सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो, अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे. अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण व उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्यों का कल्याण करे व परोपकार करे. In these lines, the poet says that there are innumerable gods standing in that never-ending sky who stand in front of the benevolent and kind people and welcome them with outstretched arms. So be the support of others and move forward, taking everyone along. The poet says that sit in the lap of the gods without any stigma. That is, if you do not any bad deed, then the gods will take you in their lap. One should not go for the welfare of oneself and others, and should be saved, because in this mortal world man is the one who does welfare of human beings and does charity. Explanation. Students, God has given us this life for our own living, but has also given us the power to think to make this life successful, and therefore we think about bad deeds.
We do not think about bad deeds. Do some such work which will reduce the suffering of others. If we can, then we will get the blessings of God ourselves. मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण परुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक है। फल अनुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु हो न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। यह सबसे बड़ी समझ है। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है, वह परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है। अर्थात सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान हैं। बाहरी कारणों के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। कवि कहता है कि यदि भाई ही भाई के दुख व कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्यों के काम आता है। According to the lines, the poet says that every human being is each other's brother. This is the greatest understanding. In the Puranas, the self-born man is considered that Paramatma or God is the father of all of us. That is, all human beings are the children of that one God. The action of each human being may be different according to the result of external causes. But our Vedas bear witness to the fact that the soul of all is one. The poet says that if the brother does not destroy the brother's sorrows and troubles, then his life is meaningless, because a man is called the one who is useful to other human beings in bad times. Explanation. Students, here I am remembering a few lines of a poet and lyricist that a partner that the name of the poet and lyricist is he said that a partner raises his hand, a partner extends his hand. If one is tired, then it is right to carry the burden someone has, and someone has rightly said, because the result we get by working together. Maybe you will never get it by doing it alone. It is said that there is a power in the organizations itself.
चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विप्र जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के अनुसार कवि कहता है कि मनुष्य को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट या बाधाएं आए, उन्हें हटाते चले जाना चाहिए। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ न बिगड़े और भेदभाव न बढ़े। बिना किसी के तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करे। According to the lines, the poet says that human beings should walk happily in the path chosen by their will. Any difficulties or obstacles comes in the way, they should go on removing them. Human beings should take care the mutual understanding should not be disturbed and differences should not be big. Without any argument, everyone should be taken together, and only then it will be possible that man should maintain his prosperity along with the progress and welfare of others. Explanation. Students, you have already heard that struggle is life, so we have to make our own path on to move forward, whether there is a sorrow or happiness in it. And if we have to move forward, then after facing every trouble, every time is every time we have to make the new paths for ourselves. Students, if you like my explanation, please like my video and subscribe it and share your comments also. I am waiting for your comments. Thank you.